Assalamu alaikum dear students. Today our topic is Vice President of India. इससे पहले हम President of India पढ़ चुके हैं. जो Vice President होता है, Vice President occupies the second highest office in the country after the President. जिस तरह President को elect करता है Electoral College, in the same manner Vice President is also elected by an electoral college, but there is one difference, that is this electoral college does not include the members of the state legislative assemblies as in the case of president. जो members of state legislative assemblies होते हैं, they don't participate in the election of the vice president. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट also holds office for a term of 5 years. अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके पावर्स क्या रहते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन भी ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. नाउ जो वाइस प्रेसिडेंट है we say he or she acts as the ex officio chairman of राज्य सभा. यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा ऑफ इंडिया, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. एंड इन दिस कैपेसिटी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पावर्स और फंक्शंस सेम रहते हैं एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. यानी बिल्कुल जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होता है, he or she also acts as the chairman of the Senate, the upper house of the American legislature. Then जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, second aspect of his powers and position we can say, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्ट करता है एज प्रेसिडेंट when a vacancy occurs in the office of the president due to his or her resignation, removal, death or otherwise. जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है as a president, it can be only for a maximum period of 6 months, because within 6 months new president has to be elected. इसी तरह जब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, if he or she is unable to discharge his or her functions due to say absence, illness or any other cause, उस सिचुएशन में भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो डिस्चार्ज करता है his functions as the president till president resumes his or her office. Dear students, our next topic is related with the president of India. President के बारे में हमने देखा कि that we can say that for the most part जो president होता है, he or she is a former power holder and a ceremonial head of the nation. यानी हमने देखा कि that normally under normal conditions में क्या होता है कि जो president होता है he or she is a ceremonial head, यानी he or she doesn't enjoy the real powers. Then the question arises that why there is a need of a president?
in India, say for example, or we can say that why there's a need of head of the state within the parliamentary form of government when the head of the state doesn't enjoy the powers in real sense. So इसका जो रीज़न है वो ये है कि दैट हमने देखा कि दैट within the parliamentary form of government there is less stability. यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या वी कैन से द गवर्नमेंट is always in need of, या government always requires the majority support within the legislature. इसका मतलब ये होता है कि दैट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं that the council of ministers may be removed at any time, and a new council of ministers will have to be put in place. So अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ऐसी सिचुएशन में reason says that there must be a mechanism at that time जो जिसके पास फिक्स्ड टर्म हो, यानी जो इस तरह ना हो कि जिसकी पोजीशन इस तरह मतलब वीक हो, जिसको जो जिसके पास फिक्स्ड टर्म हो, जिसके पास ये इख्तियारात हो एट दैट टाइम कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करे से फॉर अ टाइम बीइंग. And at that time we may say that यानी ऐसी सिचुएशन में हमें ये समझ में आता है कि जो प्रेसिडेंट है, अनदर थिंग, यानी हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी भी गिर सकती है, ख़त्म हो सकती है विद इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो मुल्क को उस वक़्त सलामती फराहम करे, यानी ऐसा एक मैकेनिज़्म हो, और वो फंक्शन, वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम कहते हैं दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट विद इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इन द केस ऑफ इंडिया वी कैन से दिस इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी अनदर ऐसी सिचुएशन में हम, यानी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है एंटायर कंट्री. यानी ऐसी सिचुएशन में जब हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर लूज मेजॉरिटी करे. इसके बगैर हम देखते हैं कि दैट इफ हंग पार्लियामेंट is created, develops after the elections, यानी hung parliament हमने देखा that kind of a parliament in which no party is having a clear cut majority. तो ऐसी सिचुएशन में अगर if this situation arises, again ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट की अहमियत बढ़ जाती है कि दैट कि वो उस वक़्त, यानी उस वक़्त एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि जो फॉर टाइम बीइंग किसी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे. देन लेटर ऑन द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू प्रूव हिज और हर मेजॉरिटी, बट एट दैट टाइम when nobody is having clear cut majority and everybody claiming that they are having the majority, then in this situation, in this exceptional situation, there's a need of head of the state at that time. There's a need of a mechanism of an office which will be enjoying a fixed tenure, fixed term, who may safeguard the country at that time, or who may, we can say, जो मुल्क को
जो कौम की उस वक़्त रहनुमाई करे, जो कौम को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सके। और बिल्कुल यही हम कहते हैं, यही वजूहात हैं। दैट्स वाई वी से देयर इज़ नीड ऑफ अ हेड ऑफ द स्टेट विद इन द पार्लियामेंट्री